Okay, now let's start. Continue from the previous topic. Yesterday, I gave you the differential human behavior in different geographical regions. The human response to the nature is entirely different. You know, there is a word we use in while discussing vegetation. There is a word called plant successor. Sometimes a plant from different region, if it is introduced in new region, sometimes it grow at faster speed, sometimes it disappear, or sometimes it controls the entire vegetation of the new area. So one plant succeeded the new area and replaced the existing native vegetation. That is called plant successor. So is the human behavior also. We have the human successor. Like when the Western Pakistan, after partition, when the Punjabi speaking people came, particularly Sikh people came, they were allotted agricultural land in the Tarai region of UP, particularly in Udham Singh Nagar or Bajpur or around Bijnor and Pilibhit, and that Tarai region was allotted to them. That land was barren. That land was considered as wasteland with rugged topography, without water, without the availability of water. Water channels were there, but water was not managed, and it was full of vegetation, full of mosquitoes, and difficult to survive in that region. But the Sikh people who came from that region, from Western Pakistan, they were allotted land in abundance in that region, and now that is treated as one of the best agricultural region of the country with all cash crops. People were living earlier also over there in the same region. लोग पहले भी रहते थे वहाँ, लेकिन एक आए और वहाँ से उन्होंने वहाँ ज़्यादा तेजी से प्रोग्रेस की. It depends on human response to the nature. पहले जो लोग थे उनका response was different. And the newly people introduced in that region, their response was different. Simultaneously, some more examples I may cite. Run of Kutch in Gujarat, northern Gujarat, in Kutch region. It's all saline area with high alkalinity in the soil. Agriculture is not feasible. And the same wasteland there was no permanent source of water. And the same land was allotted to Sikh farmers who were displaced from the Pakistan, and the same land was allotted to them. And then what happened? Immediately they introduced gypsum, managed the pH value of the soil, and the soil started giving bumper crop in that region. And those farmers are nowadays growing rice, sugarcane, all crops which require water in abundance, cotton, groundnut, tobacco, all cash crop they are taking from the same region. So they converted the wasteland into the oasis, the fertile land, the economically viable land. So only introduction. Human response to nature is very. And one more is, like while discussing migration, always migrants are more innovative and progressive than the native people. कहीं भी कोई माइग्रेशन होता है दुनिया में, तो जो माइग्रेशन करते हैं वो लोग, और जहाँ माइग्रेशन हुआ है उनसे ज़्यादा इकोनॉमिकली फास्ट होते हैं. Because sometimes society itself is a foundation for the progress. Like in Delhi, after the partition of India, Punjabi speaking Hindus came from West Pakistan or Western Punjab, and they came to, interestingly, all Hindus who migrated from West Pakistan, they prefer to settle down in urban areas.
And the Hindus, Bengali speaking Hindus who came from East Pakistan or Bangladesh, erstwhile the earlier, now the Bangladesh, they prefer to settle down in rural areas. So rice growing Bengali Hindus, they prefer to settle down in rural area. Wheat growing areas, Hindus, Punjabi Hindus, they prefer to settle down in urban areas. But most of the Punjabis, they came to Delhi. All the cities in and around Delhi, all the cities in the name of, all the colonies in the name of freedom fighters, they all are inhabited by the Hindus who came from West Pakistan. You can name any city: Subhas Nagar, Ranjit Nagar, Gandhi Nagar, Jawahar Nagar, Lajpat Nagar. Every city, because they were the freedom fighter and new colonies were developed on their name. So when they came over here, they had nothing except to sell their labor. उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ आए. But they were educated. They start educating their children, and they had no social foundations. That what I wanted to say. उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था. यहाँ जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग थे, ये कास्ट सिस्टम में, चाहे सिटी में रहते हो, लेकिन एक कास्ट सिस्टम में बंधे हुए थे कि ये काम मैं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा. But the people who came from Pakistan, they were pronounced as refugees. They were refused from one reason. There is a term refugee. One is the voluntary migration, one is forced migration, and third is the refugee migration. Voluntary migration is like most of the students here, like Arandanga has come from Haldwani. She has voluntarily came from Haldwani to Delhi. So this is voluntary migration. One is forced migration. Sometimes, like we have the caste system in India, feudal system in India. कास्ट सिस्टम में कुछ लोगों के पास खाने कमाने का कुछ नहीं होता और कास्ट की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती. सो दे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस दे आर फोर्स्ड, या तो उनकी कास्ट की वजह से या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से. कुछ फैमिली गांव से छोड़ के शहर में आ जाती है, कुछ पीछे छूट जाती हैं. दे वर फोर्स्ड, इकोनॉमिक कंडीशंस फोर्स्ड देम टू आउट माइग्रेट फ्रॉम दैट रीजन. सो दैट इज फोर्स्ड माइग्रेशन. But the third type of migration is refugee migration. Refugee in human geography means entire culture of that society, entire social group. उस समाज में 80 साल का बूढ़ा है, न्यूली बॉर्न बेबी है, मेल है, फीमेल है, हैंडीकैप्ड है, मूवेबल है, नॉन मूवेबल है. Every person has to leave the place. So all they were like Hindus. Pak means pure Muslims. Pure Muslims will stay in Pakistan. Other than the Muslims, either you convert into Islam or you spare the land. So जो Hindus थे, they were en bloc forced to out migrate from that region. अगर एक भी हिंदू वहाँ नहीं बचेगा तो that means they were treated as refugees. So refugee migration, voluntary migration and the forced migration. That are the three type of migration. जब भी migration होता है, जब वो लोग यहाँ आए, वहाँ कास्ट का बंधन नहीं बचे. कोई फैमिली दिल्ली आ गई, कोई चंडीगढ़ बस गई, कोई लुधियाना में छूट गया, कोई हिसार रह गया, कोई पानीपत चला गया, कोई रोहतक छूट गया, कोई कानपुर चला गया, कोई गांव में बस गया, कोई शहर में आ गया, कोई रेलवे कॉलोनी के रेलवे लाइन के साथ में कोई कॉलोनी बना ली. जो एक गांव बने हुए थे, सोशल ग्रुप्स यहाँ आए तो सब छितरा गए और फैल गए. उनके ऊपर कोई कास्ट का बंधन नहीं था कि मैं क्या काम करूँगा तो मुझे कोई क्या दे कहेगा. अब यहाँ अगर कोई पर्सन बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ ट्रेडर से किसी अग्रवाल परिवार समाज में पैदा हो गया और उसको कहे कि आप नॉन ट्रेडिंग के काम करो, खेती बाड़ी करो, तो उसका समाज ही नहीं करने देगा. नो 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 नो, डोंट डू. बिकॉज उसको एक तो ट्रेनिंग नहीं मिली,
और उसको फिर ताने समाज के लगेंगे कि वो कर ही नहीं सकते। सो अगर वो प्रोग्रेसिव होना चाहे तो नहीं हो पाता। सो इट मीन्स सोसाइटी इटसेल्फ इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक समटाइम्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पर्सन। समाज ही अपने आप में बंधन बन जाता है, कई बार उसको आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए थे उनके सामने तो कोई बंधन नहीं था, जिंदा रहना था। उन्होंने सब कार्य किए। उस टाइम स्टीम इंजन होते थे, रेल में कोयला फेंकने से लेकर, खलासी के जॉब से लेकर, रेलवे लाइन के रिपेयर से लेकर, फिर टिकट काटने से लेकर, फिर टिकट दुकान के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान से लेकर, और उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, कहीं थोड़ी सी जगह मिल गई उसी में। नाउ यू कैन सी आफ्टर 60 years of 70 years of independence, वो 70 years हो गए, 47 से 2017 आ गया, 70 years में दिल्ली की जो सबसे पॉलिटिकली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली सबसे बेस्ट क्लास कोई है तो वो रिफ्यूजी माइग्रेंट्स है, जो 70 साल पहले जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी यहाँ की जो नेटिव सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनसे तेजी से ज़्यादा प्रोग्रेस की उन्होंने, क्योंकि यहाँ उनके ऊपर सोशल बाउंडेशन नहीं है। So always in human geography we discuss the behavior of the native people and the behavior of the migrant people. Migrants are more progressive. They don't have anything to lose, but the native people has lot of complications, foundation, and they have to lose. They have to surrender to the social foundations जो हमारे ऊपर समाज के बंधन। So this is all we interpret the human behavior in different geographical conditions in human geography, and this is basically the concept of human geography. Then the major subfields, what we are supposed to discuss, what are the major subfields of human geography? Basically we discuss human evolution, and ethnography, different races or the racial groups, ethnic groups, then population demography, and demography includes population growth rate, population size, population gender composition, population movement, and occupation. So, and apart from this, we discuss the migration, the movement, and this is the another subfield is the settlement, and the levels of development. These are the major subfields of human geography. Human evolution, I gave you the concept how man evolved from anthropoid to hominoid, and hominoid to Australopithecus, to Homo erectus, Homo habilis, and the present day man called Homo sapien. So in different time period, how the brain and the body mass index changes. In the human evolution, the man is having the maximum index of their brain size and the body mass. Cranial cc capacity. Cc, the brain size is measured in cc. Cranial capacity. Cranial means इस स्कल की, इस खोपड़ी की कितने साइज है in terms, and what is the size of the human body.
I discussed it earlier. I explained it to you. The different, is still I may explain how in the human evolution, then it is necessary to recall the life forms. What was the first life form on the earth? Life forms. Fish, all aquatic in water, and after fish, aquatic life. After fish, amphibians. Amphibians like frog, which live on water as well as on land both. And after that, reptiles like dinosaurs, to lizard, to crocodile and all. And after that, mammals. And mammals are pronounced as anthropoid. जो चार पैर पे चलने लग गए थे. And anthropoid separated into hominoid. So it is basically 26 MY million years ago. 26 million years ago, from the life form, from anthropoid, hominoid separated. And from hominoid, it is basically Homo erectus. Homo erectus, and it is almost 18 million. Sorry. Australopithecus. Sorry. Let me recall. Let me make it. They disappeared, and hominoid. This is Australopithecus. So almost 18 million years ago, 18 MY, Australopithecus. And from Australopithecus, another branch, they also disappeared, and another branch started. This is Homo erectus. Almost 9 million years ago, Homo erectus. Again they disappeared. Then Homo erectus, Homo habilis. And they also disappeared over the time, and the present day man called Homo sapiens. So this is the human evolution. This is almost 5 MY, 5 million years ago, and this is 1 million, 1 MY. 8 million साल पहले, आज से 10 लाख साल पहले Homo sapiens की. And present day Homo sapiens are basically, this is, I'm talking about the human evolution, how man evolved. In the human evolution, I'll say man registered 5 basic somatic changes in his body. So there were, इसके साथ साथ इंसान के साथ साथ होमिनॉइड के साथ साथ बहुत सारे और भी चीजें साथ चली, लेकिन उनमें कोई भी चेंज नहीं आया. बहुत सारे मंकीज, एप्स, जैसे हम बोलते हैं चिंपांजी, they were the hominoids. उसमें से वो चिंपांजी आज भी वैसा ही है. That is called Pongidae. Pongidae में चिंपांजीज, then gorilla, gibbon,
and orangutan. ओरेंगुटन साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया. So they are centered in isolated patches in equatorial rainforest. Chimpanzee in Congo region, gorilla mainly in Amazon region, gibbons generally found in northeastern India, in Arunachal Pradesh, Myanmar, and some upper Assam area, and orangutan in Indonesia, Malaysia, Thailand, in that region. So ये भी थे, ये यही जैसे होमिनॉइड अलग हुआ तो इंसान के साथ ये भी अलग हुए, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आया. But in the human body, what are the changes? I said there are some changes. First change, entire human body was full of hairs. हमारे पूरे शरीर पे बाल होते थे. So therefore the basically Cro-Magnon. And second is Neanderthal. Cro-Magnon ये बेसिकली फ्रांस की केव्स में ह्यूमन स्केलेटन मिले, एंड दिस इज नियंडरथल इन जर्मनी. इन जर्मनी देयर इज द नेम ऑफ अ रिवर नियंडरथल, और उस नियंडरथल के बेसिन में वी फाउंड सम स्केलेटन. Neanderthal was almost 7 feet, 6.5 feet tall, and his body was bent on 45 degree. कितना 45 degree पे bend होता था, and his entire body was full of hairs, and he had tail. उसको पूंछ थी. So most of the mammals, all the mammals are having tail. So basically the brain size was smaller. धीरे धीरे ब्रेन का साइज बढ़ा. पहले ब्रेन यहाँ होता था. टू मेंटेन द ग्रेविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगर ब्रेन यहाँ होगा तो आंखें यहाँ होनी चाहिए. सो सभी मैमल्स जितने भी हैं उनके सब ब्रेन पीछे होता है और उनकी आंखें ऐसे देखती हैं. क्योंकि हमारे ब्रेन यहाँ से खिसक के इधर आ गया, सो वी बिकेम एबल टू स्टैंड अप वर्टिकल. इट इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए ग्लैंड that is called pituitary gland. The pituitary gland developed, वो gland यहाँ होती है, जैसे thyroid यहाँ है, adrenal gland यहाँ है, salt को control करती है, ये antibody thyroid control करती है. Pituitary gland brain की synchronize रखती है. So brain सीधा रहता है. अगर यहाँ होगा, none of the mammal have pituitary gland except the man. That's why man became able to stand up on 2 legs. सीधा खड़ा हो पाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए. ब्रेन यहाँ होता तो हम फिर सीधे ही होते, ऐसे होते. जैसे ब्रेन की लोकेशन चेंज हुई pituitary gland की वजह से, द माउथ ऑफ द मैन, लाइक दूसरे मैमल्स का माउथ लंबा होता है, तो माउथ ऑफ द मैन बिकम फ्लैट बिकॉज ब्रेन्स लोकेशन शिफ्टेड. Skull size become larger. Human CC, देखिए इसमें CC cranial capacity, इसकी कितनी कैपेसिटी है? Australopithecus was having almost 700 cc brain size. इतना सा. आपने एलिफेंट का साइज देखा है? 40. उसका CC is only 50. अप्रॉक्सीमेट 40 to 50. छोटा सा ब्रेन साइज, उनके टोटल ब्रेन का साइज छोटा सा, और बॉडी मास कितना बड़ा है. इंसान का ऑस्ट्रेलोपिथेकस था तभी भी 700 था. फिर इरेक्टस में अप्रॉक्सीमेटली 900 सीसी हो गया. इवेलिस में इट इज ऑलमोस्ट 1100 सीसी. होमो सेपियन इज हैविंग 1400 सीसी. cranial capacity इंसान की 1400 cc. So this is about the different subfields how human evolution have taken place.
सो द लेटेस्ट आज के इंसान को हम क्रो-मैग्नन से बहुत जोड़ते हैं, निएंडरथल से उतना नहीं जोड़ते क्योंकि निएंडरथल हैड टेल, उसको पूंछ थी, निएंडरथल ऐसे झुका हुआ था, निएंडरथल की पूरी बॉडी पे हेयर्स थे, बाल थे, लेकिन निएंडरथल आज के इंसान के बहुत करीब था, दो पैरों पे खड़ा हो गया था, उसका जॉ साइज ऑफ द जॉ वाज बिगर, बहुत बड़ा था। जैसे चिंपांजी का जॉ देखा ना, जबड़ा नीचे से निकला हुआ होता है, एंड जो कार्निवोर होते हैं जिनको सब तरह का खाने को चीरना होता है, फाड़ना होता है, सो देयर कैनाइंस आर लिटिल बिगर, उनको बिगर कैनाइंस थे, लेकिन वो कैनाइंस अब देखते हैं सबके दांत का साइज बराबर है, हमारे कैनाइन छोटे हो गए ना, ये कैनाइन है इधर आपका जो काटता है, अगर टाइगर का, लेपर्ड का या लॉयन का एक कैनाइन देखते हो ना फाड़ने के लिए, सो दैट इज सब बराबर हो गए, जॉ साइज पीछे चला गया, माउथ फ्लैट हो गया, कैनाइन डिसअपियर हो गए, कैनाइन का लेंथ घट गई, सो टीथ बिकम्स, ऑल टीथ बिकम्स इक्वल। सो these are the changes man registered in its human evolution. So this is about the human evolution, and it is treated that human evolution have taken place. We have different evidences. It evolved in Java. We used to say Java man. So this is Java man is also very close to today's man. Java man. Then we have evidences that it evolved in China near Beijing. That is called Peking man. Peking man. And then Ramapithecus in India, in Sivalik, it is foothills of the Himalaya. There is one fossils which are known as Ramapithecus. In India, we have the fossils. Solomon and in the Malawi river, Malawi lake, you know, Great Lakes of Africa. Great Rift Valley में आपने lakes मालूम है ना? Can you name some of the lakes? कुछ lakes का नाम बताएंगे? Lake Tana है? बेटे? Malawi Lake, Tanganyika Lake, Edward Lake, Albert Lake, Tana Lake. So these are the series of lakes. So Solomon. There is one also called Solomon. No, Solo. Lake. One of the lake is there. Near that lake, इसको जरा मैं आपको बताता हूँ क्या है ये. अभी इसको रखते हैं. It disappeared from my mind. I started forgetting the things. So this is basically human evolution. So it shows that human evolution have taken place either in Africa or in Europe or in southern Himalayas or in China. It is because it is the outcome of the climatic conditions, whether climatic conditions are supportive or not. And it means human evolution have not taken place from one area. It has evolved at different places. We have the different fossils. The present day man is very close to the last fossils found in France. That is called Cro-Magnon. Cro-Magnon man is the closest